this chapter with a question. Right? So, please, first of all, chapter's name, that is haloarine and haloarine. Haloarine. Write the question. Classify the following. And aromatic, example, as definitely as aromatic या फिर aromatic. ठीक है, aromatic aliphatic 1 degree, 2 degree, 3 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree. उसके बाद saturated, saturated और 7 unsaturated. Right? So I hope you may be aware of like, most of these names apart from a few. एक काम करते हैं. So ये आप I'm making this clear. I'm not saying these are aromatic. Fine, I'm giving you the structure to classify them. Like which aromatic, which are aliphatic, what is bounding, what is what is superior. Okay, by the way, are you of this bond line structure? Somebody tell me. Are you comfortable with this bond line structure? Or you are more comfortable with this? Yes. What? Amna? Right, Amna? अरे क्या आवाज है क्या आप लोगों को? हाँ भाई बताइए. Am I audible, guys? Yes, Mariam, Sufyan, Taha, Amna, am I audible? Yeah. Okay, I'm asking, are you comfortable with this bond line, this type of structure? Yes, sir. So what about others? Amna, Mariam. जल्दी बताओ यार. आमना, are you comfortable, Amna? Amna, are you comfortable with this type of structure, Amna? Oh dear, ये है नहीं क्लास. Mariam, 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 are you comfortable with this type of structure? Yes, sir. Okay, what about Taha? Taha, are you okay with this type of structure? No, Taha is not comfortable. Fine. ठीक है. चलिए, Taha, can you please have your mic on? Yes, sir. ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा. If the bond ends, if a line ends with an atom, बोलिए. If The line line ends with an atom. ही तो है ना सारे. Yes, sir. Line ends with an atom, that means this is a bond and this is the atom. This is a bond and this is an atom. ठीक है. For example, this line, it is ending with a fluorine atom, so this is the atom and this is a bond. Make sense? Yes or no? नहीं याद रहेगा? Yes, sir. Okay. Now, if there is no atom, then starting and represents carbon. For example, this line, this is one line. This is one line, na? This line does not Yes, have sir. any atom. No, this is one line, right? So it means that here also we have carbon and here also we have carbon. Now this line and this line does not have anything, so here also we have one carbon.
Here also we have one carbon. Does it make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. जल्दी बोलिए. ठीक है. Now it represents carbon. वो बात तो सही है. With अब यहाँ पे एक क्लोरीन डाल दे, इतना तो आपको समझ में आया. यहाँ तक I think you have got. Yeah? Yes or no? Make sense till here? Yes, sir. This structure is like this. Make sense? Now the carbon, like when we don't show hydrogen, right? If there is no atoms represented between the line or on the line, the ends of the line, then it is carbon with appropriate number of hydrogen. With what? Taha? Appropriate number With of hydrogen. appropriate number of hydrogen. For example, carbon makes 4 bonds. है ना? 4 bonds. Now this first carbon atom, it is making how many bonds right now? You can see only one bond. Make sense? Yes or no? Yes, sir. It's making only one bond. है ना? So the rest of the 3 bonds will be made by hydrogen. So that is the appropriate number of hydrogen. So this carbon atom, it contains 3 hydrogen. Now how many bonds does this carbon need? This carbon already have bonds. Tell me, What, sir? how many lines can you see originating? This carbon, the Sir, circle carbon, three. it has how many bonds? So 3. 3. So what will be the appropriate number of hydrogens attached to this carbon atom? How can we complete the valence of 4? 1 hydrogen. What about this carbon? How many hydrogen does this have? इसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? Very good. This will be having CH2. What about this carbon atom? How many hydrogen should we give to this 3. one? 3, CH3. So your structure is going to be CH3, CH, CH2, CH3, and here you are going to have fluorine. This is the structure. But can you see how quickly can we make the bond line structure? See, I've made the same structure. This and this structure are same. But how much time this one is taking? Too much time, right? Taking too much time. I mean, unimaginable amount of time. You can make the structure in 1 second, and it is taking at least 3 or 4 seconds. That means you are going to waste like whatever time you are using right now to make the structures. If you are going to make this open chain structure, then you will be wasting triple time. You'll be using triple time. For example, this will take 3 seconds, and this will take 1 second. So in the complete organic chemistry, we will be using bond line structures, even though majority of the NCERT examples, they use open chain structure, but we will be using bond line structure so that we can do maximum number of problems. Yes, sir. Now I will send you a PDF. Those who are having problems in this bond line structure, I will please message me on WhatsApp. I will send you a PDF. There you will have multiple examples to understand. You read that PDF and also do the example questions and the problem questions. You will be what I can say. You can get familiar. You can get familiar with this bond line structure, and you can also have some kind of mastery in it. Like just by looking at a particular atom, for example, here you can look and tell that there are 2 carbon atoms, and that's what is needed. If you will be having problems in, I can't understand any hydrogen there if you write bond line structures, then you will be having problem in the complete 4 chapters of organic chemistry. So today is the day. You will get a PDF for bond line structure. Read that PDF, make the structures. If you have any doubts, message me on WhatsApp because it's a very simple topic. Fine. ये हमने थोड़ा सा ऐसे बता दिया. Now you can improve on it slowly. In order to improve on it, you will require some question. NCERT में तो आपको मिलेगा नहीं because it is a separate topic. So send you a PDF. There you will get some question also. Read the theory, practice the question. There are very few, like 10, 15 examples will be there. In a day, you will be able to look at a particular compound and tell me how many carbons, how many hydrogens, how many bonds, and all of those. But if you are going to delay this, then it is going to be a big problem. ठीक है? चलिए. Hopefully, अभी तो जो भी दिक्कत है जिसको वो आप हमको मैसेज कीजिएगा. I will send you. Please, but message me. I will. Otherwise, I will forget it. Okay? It is no more my responsibility. I mean, I tend to forget things very quickly. So इसको हम फिर से बना देते हैं. Like I don't like the blue color right now. We have A structure, which is this one. B structure is this one.
By the way, how many of you know about this 1 degree, 2 degree, 3 degree? These terms are, I hope all of you are aware of this: aromatic, aliphatic, 1 degree, 2 degree, 3 degree, Yes, sir. saturated, unsaturated, right? Is there anyone who is not aware of one of these words? Please let me know. If somebody is not aware of any of these words, please let me know. कीजिए. Haloalkane, halorine is going to take a lot of time. So please be patient. Whatever time you are going to give to this chapter, that will be an investment for the next chapter. Okay, the next chapters are going to be much easier if you focus and if you do practice in this particular chapter. Acha, now IUPAC nomenclature will also be a thing that will be a bit new on how I teach IUPAC nomenclature. So please message me on WhatsApp. I will send you a playlist. You can watch that playlist and you can uh, learn the IUPAC nomenclature, because the way I do nomenclature, it is a bit different. Okay, now? So have that particular playlist with yourself, because hopefully you will be able to understand the logic behind the method I use for the IUPAC nomenclature. But if you don't understand anything and if you want to go into the details on how I am doing things, then you can refer to that particular playlist, because IUPAC nomenclature is not really a part. It is a part, but it is not a priority in the 12th standard. Okay. Students are expected to know the IUPAC nomenclature from the 11th standard itself, but still I will be discussing the problem. Will be not learning the IUPAC meaning. Fine. Now you can understand how I am doing the naming by looking at it. Hopefully you know that Cl is chloro, fluorine is bromo, alcohol is all, and carboxylic acid is oic acid. I hope you know the priority. If there is carboxylic acid as well as OH, then we give the priority to carboxylic acid. Fluorine can never be a functional group. It is always going to be a substituent. Then you have alkyl substituent. Then you have methyl substituent, ethyl substituent, isopropyl, and those things. Fine. कुछ चीजें तो आती रहेंगी. चलिए, इसको कीजिए पहले. Send the answers on my WhatsApp. Easy of doing this ऐसे हम बता देते हैं. For example, A1. A जो है आपके पास, this is going to be, ये आपके पास 2 degree भी है, because fluorine is attached to a carbon atom, which is attached to furthermore 2 carbon atoms. So fluorine is what, 2 degree. And fluorine, it is also aliphatic. It is not an aromatic, and it is also saturated. तो आप यहाँ पे क्या क्या लिख दीजिए, देखिए. It is aromatic या aliphatic. It is aliphatic. That means 2 number है ये. And whether it is 1 degree, 2 degree, or 3 degree, it is what, 4. ठीक है, at 2 degree. It is saturated or unsaturated. It is saturated. That means it is 6. तो 2 4 6 वाली प्रॉपर्टीज इसमें. उसी तरह से बाकी सब कोई save your time.
Very good, Sufyan. I'm waiting for others. Please send your answers on my WhatsApp. You have like 2 more minutes. You guys have 1 more minute. Please start to send me whatever you have done. भेजो भाई, आमना, मरियम बतूल, मरियम लोहानी. Please send the answers. अरे बाप रे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है. ओके, ताहा, यू विल. आप, ओ माय गॉड, ताहा आपने स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया. ताहा. Yes, sir. ताहा, इतनी ज्यादा काहेली क्यों? हाँ, that you have not even bothered to make the structures. How will I understand that this F1 is Sir, वो 146 or last it one is is my. He said to 146? send it, so I was in a hurry. अच्छा, यू आर इन हरी. अब बना लेंगे ना, लेकिन अब बना लीजिए आप. अभी Yes, तो sir. फ्री बैठे हैं, ठीक है, बनाइए. अब ये तो हम मतलब डिस्कस करके बताएंगे, है ना. हमको देखना है कि आपने किया या नहीं है. ठीक है. और व्हाट अबाउट अदर्स भाई? आमना, 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 turn your mic on. आमना, आमना, नहीं ऑडिबल. आमना, 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 जल्दी माइक ऑन करें. नहीं, नहीं बच्ची आज. आमना, यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास. नो, शी इज नॉट प्रेजेंट. मरियम बतूल, एम आई ऑडिबल? मरियम, मरियम Yes, sir. बतूल, एम आई ऑडिबल? मरियम, मरियम जी, क्या आंसर नहीं दिख रहा है आपको?
माइक ऑफ हो सर गया। 2 मिनट जल्दी कीजिए। नहीं नहीं, जितना आपने कुछ किया है नहीं किया बताइए। यू हैव डन एनीथिंग? थोड़ा क्या है। जो किया भेजिए ना, हमको असल में टाइम नहीं है ना ज़्यादा। वैसे तो आप इंतजार करते रहते हैं, ओ माय गॉड सर हमको और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। जितना किया उसको भेजिए। आई वाज जस्ट वांट टू Okay, चेक I'll इट। look for the phone, sir. 2 minutes. अरे भाई साहब, यू हैव टू लुक फॉर दिस वन ऑन रिकॉर्ड। मरियम लोहानी, मरियम लोहानी, एम आई ऑडिबल? मरियम लोहानी जी। जी सर, डन। एक मिनट। जल्दी थोड़ा बहुत सर भेजिए। मैं भेज रही हूँ। नहीं नहीं, आप भेजिए, लिखना नहीं है कुछ भी। या तो फोन ढूंढ दिया आप, और या तो फोटो खींच के भेजिए। आंसर नहीं करना है अब आपको। ठीक है, सेंड इट क्विकली। ओके ठीक है मरियम, भेजिए जल्दी भेजिए। एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। मरियम लोहानी, आमना एंड मरियम बतूल। आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट योर आंसर्स नाउ। बहुत लेट कर दिया आपने। चलिए। So the second one, the B structure, it is going to be, this is a 3-degree carbon atom, so it is going to be 3 degree. That तो aromatic or aliphatic, it is going to be aliphatic. Then with one then this will be 3 degree. 3 degree कौन सा number है? 5 number है ना, 5. And whether it is going to be saturated or unsaturated, obviously this is saturated. Now this is what aromatic to 1. Whether it is 1 degree, 2 degree, 3 degree, तो ये बात मतलब you can say, पर by the definition it is going to be 2 degree. But generally we define 2 degree, 1 degree, and 3 degree only for those bonded atoms which are not, for those bonded atoms which have single bonds only. We generally do not define 1 degree, 2 degree, and 3 degree for aromatics and when you have double bond. ठीक है? तो यहाँ पे we will not write anything whether it is 1 degree, but if somebody like नहीं बताओ हमको जानना है, बताओ क्या डिग्री होगी उसकी, तो बोल के भाई ठीक है 2 डिग्री। But why do we classify things as 1 degree, 2 degree, and 3 degree? It is because when you have only single bond, then reactivity is low. Like single bond is not very reactive; it does not have high electron density on itself. That is fine. We say that okay, fine, 1 degree may it will be easier to remove that atom. 2 degree it will be easier to attack that atom. 2 degree will be difficult. 3 degree. Okay, so in order to understand the reactivity, we have classified these things. If something is aromatic, तो उसको unsaturated कहना भी बहुत बड़ी गुनाह, मतलब गुनाह तो नहीं है, unsaturated ही है वो, right? But the reaction it is going to show, it is not because of the double bond, rather because of the aromatic nature. So we have to first of all, like अगर आपसे पूछा जाए ये aromatic है या 2 degree है या unsaturated है, it is all of those three things, right? It is aromatic also, it is 2 degree also, it is unsaturated also. But if they ask you what is this compound, then you will say aromatic, because in chemistry we talk and classify things in order to understand the reactivity. All the reaction that it is going to show, the C molecule, the chlorobenzene, it is going to show because of the aromatic nature. It is not going to show the reactions because of the double bond. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Amna, Mariam, Sufyan, and Taha.
Yes. Yes, sir. बोलिए, ठीक है। तो आपने जो भी लिखा सही लिखा है। इवन राइट नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स थोड़ा सा इनिशियल स्टार्टिंग फेज में हम ये चीज भी यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इफ आई क्लासिफाई दिस एंड आई विल क्लासिफाई दिस एज 2 डिग्री एंड आई विल क्लासिफाई दिस एज अनसैचुरेटेड। बट तो पूछे ये है क्या, तो आप कहिएगा एरोमेटिक, विल से दैट इट इज एरोमेटिक। फाइन। नाउ यहाँ पे मे बी मस्ट हैव कुछ बच्चों को दिक्कत हुई होगी। दिस इज 1 डिग्री बिकॉज दिस कार्बन एटम इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन एटम जिसको अल्फा कार्बन भी बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ। इट इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, ओनली वन कार्बन एटम। That is why this is 1 degree. 1 degree aromatic or aliphatic. Obviously, it is going to be aliphatic. That is two. 1 degree, 2 degree, or 3 degree. It is going to be what? It's going to be 1 degree. That is three. And it is in the third option. And then saturated or unsaturated. Obviously, it is going to be saturated. That is six. Aliphatic two. Whether it is 1 degree, yeah, this is 1 degree. That is three. And whether it is saturated or unsaturated, obviously, it is going to be unsaturated. That is seven. If it is going to be aliphatic, that is two. See here, we don't have any ring here, na, inside. It's not going to be aromatic. Two and two, 1 degree is 2 degree, that's four. And saturated or unsaturated, obviously, this is saturated because we don't have any double bond or triple bond. What is unsaturated if we don't have any double bond or triple bond? This is obviously going to be aliphatic, which is 2, and it's going to be 2 degree, which is 4, and it's going to be saturated, which is 6. Here, this is going to be 1 degree. Aliphatic or aromatic, it is going to be aromatic, that is 1. 1 degree, 2 degree, 3 degree, it's going to be 1 degree, that is 3, and it's going to be saturated, unsaturated, it's going to be unsaturated, 7. ठीक है, तो हम थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। एरोमेटिक में शुड ना बेंजीन रिंग, एलिफैटिक में नो बेंजीन रिंग, 1 degree में सी आई एम राइटिंग अल्फा कार्बन, आप समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन एटम ना, जैसे हियर वी हैव 4 कार्बन एटम्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, अल्फा कार्बन connected to one more carbon, one carbon connected to one carbon. 2 degree alpha carbon connected to 2 carbon atom. 3 degree alpha carbon connected to 3 carbon atom. Saturated only single bond. लेकिन there will be no double bond. Unsaturated there will be double and triple bond. ठीक है, आप कहेंगे सर ये आप पहले ही बता देते, हम लोग और अच्छे से करते। नहीं, there is a reason I don't say what are aromatic, because you know these, you apply your mind, जितना भी आपका mind जो भी वर्क करेगा, now you will remember it far more easily. ठीक है, चलिए कॉपी दिस डाउन, जिनका कुछ गलत हुआ उनको ठीक कीजिए। इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी नाउ, प्लीज आस्क मी नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिकॉज यू विल बी यूजिंग दिस वर्ड्स एरोमेटिक एलिफेटिक, कहीं भी आ जाएगा, बिना नोटिस क्या आ जाएगा, कुछ भी 1 degree 2 degree कहीं भी हम भी बोल देंगे, सवाल में आ जाएगा, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? So you should be very much aware of these words, like what is saturated, what is unsaturated. It's not like every time there will be a word saturated, then I will have to explain it will not contain any double bond. Whenever there is a word that is unsaturated, then I will have to explain, oh, this will be having a double bond and so on. Okay, copy this down, raise your hand once you are done. अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. आ रहा है ना? Initially, you must fully concentrate on solving the problems of general organic chemistry in the sense, वो प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की बात नहीं करें, वो जहाँ पे इस्तेमाल होगा हम आपको बता देंगे। बट फॉर एग्जाम्पल, the structure is written in such a form that you are not able to
even understand क्या structure को समझ में नहीं आ रहा. Whatever is written in condensed form, not able to crack it, how to make the structure. So you should be completely okay with all of these small things जो आपकी ना अटकेंगी. उससे पहले first of all you have to be completely clear. Okay. Give me any structure, I will write the complete, like I can draw the complete structure. Give me bond line, I can give you the full structure. Give me condense, I can give you the bond line. Condensed structure, we will talk about condensed structure and everything. वहां से you have to be very much careful, right? Although we are going to learn a few things more, but these are the important things. Like for example, today we are going to learn classification of haloalkane and haloarine on the basis of number of halogen atoms. If you have one halogen atom, then it's going to be monohaloalkane. If there will be one halogen atom in haloarine, then it will be monohaloarine, dihaloalkane, dihaloarine, trihaloalkane. Then there will be types also geminal, vicinal. These are going to be important. But you just need to read them. What's going to be more important is that the part which is not going to be asked in the question directly. For example, how will you go from this structure to like there will be condensed structure? How will you make the bond line structure? There will be no question on that, but that is going to help you in all the questions, all the reaction questions. Raise your hand if you're done, guys. Jaldi haath raise करें. Waiting for Amna, Mariam, and Mariam. Amna, Mariam Batul, and Mariam Rohan. Mariam Batul and Mariam Rohan. Waiting for Amna. आमना तो नहीं है यार क्लास में, लगता है बिल्कुल ही नहीं है आमना. क्या हो गया इसको? चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. हैलोअल्केन एंड हैलोरीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हैलोजन? ठीक है. Halogens is denoted by X, and these are what? Chlorine, chlorine, bromine, and astatine. Even though astatine is also a halogen, but we are not going to see astatine in this particular chapter. We are only going to see these particular atoms attached to a carbon atom. So, for example, if you have any alkyl, if you have any alkane, for example, कैसे दिखेंगे? All of these make single bond. So you will have haloalkane. Haloalkane is going to be having a general formula of Rx. Rx. Examples क्या हो जाएंगे? Example will be going to be CH3Cl, CH3Br, or it will be CH3CH2Cl, or it will be CH3 carbon carbon CH3 behind Br. So these are examples of what halogen. It can be also something like this, which will be a ring type structure, and here you can have two Br also. There is no issue in that. You can have something like this, and you will have fluorine, and here you will have fluorine. You can have fluorine on the same carbon atom also. That is also going to be halogen. You're going to have chlorine or chlorine. So all of them, what examples of halogen? All of these are examples of halogen. Now halorine. Halorine will be shown as AR, that is going to be an aromatic arene wala case, arene, and it has a halogen atom. For example, benzene ring, and then a halogen atom attached to it. Now, so by the way, this is also haloalkane. So here, but we have benzene ring. Yes, correct. We have benzene ring, but bromine atom, it is attached to a carbon atom which is not part of benzene ring. Bromine is attached to a carbon atom which is not part of benzene ring. So ये क्या है? This is haloalkane only. It's not halorine. In halorine, what should happen? The halogen atom should be directly bonded to an aromatic ring. Okay, it should be directly bonded to an aromatic ring. Here, the bromine atom should be bonded to a carbon atom, simple carbon atom.
More examples could be you can have two fluorine. You can have two fluorine. Okay, you can have three also. That's not a matter. You can have one CH3 and then another halogen. Copy this down. Now, on the basis of, like you can see, there can be one halogen atom or two halogen atom or three halogen atom. So classification can be done on the basis of the number of halogen atoms. Copy this down, raise your hand once you're done. For Amna and Mariam Lohani. आमना तो है नहीं ना, आमना के आमना ये है कहाँ भाई? चलिए, नेक्स्ट राइट दी हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजेन एंड हैलोजन. The first classification we are going to see on the basis of the basis of, ठीक है ना, on the basis of number of, on the basis of what? Number of halogen atoms. Number of halogen atoms. I mean, this is not very ये क्लासिफिकेशन कि आपके पास आ जाए बायो की तरह क्लासिफिकेशन ऑफ different species, उस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं जो इम्पोर्टेंट हो. But we are going to use these words, so you should be knowing, you should be aware of these words, है ना? Because these words are going to be used in the wordings of the questions also, right? So you should be knowing these words. Very easy also. If there is one halogen atom, one X atom, or when there is two X atoms, atoms in the mass, and when you have three X atoms, or फिर, like both of two X of these is going to be what? Polyhalogen compound also, right? It's more than one. So on one halogen atom, if it is a haloalkane, then you will call it mono haloalkane. ठीक है? And for halogen, we will call it mono haloarine. So if there is two X atom, then we will call it dihaloalkane. For halogen, dihaloarine. For three, we are going to call it trihaloalkane. For four, we are going to call it, for haloarine, we are going to call it trihaloarine. ठीक है? टू हाइड्रोजन एटम में ना देयर आर आल्सो वन टू, मतलब इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती है, इसको लिख लीजिए, ये भी तीन नहीं आ जाएगा. मतलब जेमिनल एंड विसिनल. ठीक है?
जेमिनल, विसिनल। जेमिनल का मतलब व्हेन वन कार्बन एटम हैज टू हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही कार्बन है, इसमें दो ग्रुप कुछ और लगे हुए हैं, वी डोंट नो व्हाट दोस ग्रुप्स आर, नो मैटर व्हाट दोस ग्रुप्स आर, देयर आर टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द सेम कार्बन, इसको बोलते हैं जेमिनल। यू नो देयर इज वन साइन जेमिनाई, यू नो, twin, yes or no? There is one sun sign, right? Gemini or Gemini. What do you call it? Why? There is one sun sign. Nobody knows about this. क्या बात कर रहे हैं? Nobody knows about this. Gemini. Mariam Batul, Mariam Lohani, Sufyan Khan. Nobody knows about this. Gemini, Sir, Cancer. Sorry, what? Yes, Mariam. sir, Cancer? Cancer, Gemini. Then there is और क्या? Pisces, Pisces. पता नहीं क्या Oh, बोलते हैं उसको. Libra, Taurus. You're talking about that? हाँ, या करेक्ट. Okay. जेमिनाई है ना उसमें से एक. देयर इज वन ना, जेमिनाई नहीं है. Gemini तो एक सेकंड जेमिनाई जी सर, एक होता है zodiac जेमिनाई. है सर, signs. हाँ है सर। एक जोडियाक साइन होता है ना, तो जेमिनाई क्या होता है? वो ट्विंस होता है ना, जैसे पाइसीज और पीसेस में क्या मछली होती है, कैंसर में देयर इज वन दैट, वो क्या होते हैं, केकड़ा होता है उसमें. टॉरस में आई थिंक देयर इज वन हॉर्स, राइट? और देयर इज लाइन, आई डोंट नो व्हाट इज जेमिनाई. जेमिनाई में दो ऐसे It लड़कियां is रहती हैं, two तो दीज आर lines. ट्विन. हाँ, टू लाइन से दैट इज ट्विन. ठीक है, टू लाइन तो वो तो मतलब वेरी मच टू सिंबॉलिक, बट जो उसका शेप जो होता है ना, दैट क्रिएचर जो होता है, दैट इज ट्विन. तो वही से आया जेम का मतलब वही होता है. You have geminal, this gem and this gem is same. ना इतना बता दिया, आप भूलिएगा मत, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी कमिंग इन द अल्कोहल चैप्टर, है ना. जेम, जेम डाई ऑल आएगा वहां पे, फिर एल्डिहाइड में भी इस्तेमाल होगा. इतना सब कुछ बता दिया हमने लीब्रा फिब्रा के हिसाब से. चलिए, विसिनल. विसिनल में विसिनिटी. विसिनिटी, यू नो व्हाट इज विसिनिटी? शी लिव्स इन द विसिनिटी ऑफ माय होम. मतलब क्या हुआ इसका? व्हाट डज इट मीन? विसिनिटी का मतलब बताओ भाई, Nearby. इंग्लिश के बच्चे आप लोग. विसिनिटी बोलो. नियर बाय, है ना, बगल में. ठीक है ना, बगल में. तो बगल बगल अगल बगल रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इसके पास कुछ दो ग्रुप होंगे, कार्बन इसके पास दो ग्रुप होंगे. नाउ दीस कार्बन आर हैविंग हाइड्रोजन एटम. दिस इज गोइंग टू बी विसिनल. अरे में, बिकॉज सी, nobody will ask draw the structure of geminal dihalide. Nobody will ask draw the structure of geminal. Nobody will ask, but they will ask in the question, when geminal, when geminal dichloride is hydrolyzed, then the product is, options will be given. ठीक है, तो सोचिएगा, व्हाट इज जेमिनल? ओ माय गॉड, इसका जेमिनल क्या है? चलिए, कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन. जल्दी कीजिए, जल्दी. वेटिंग फॉर मरियम बतूल, मरियम लोहानी एंड ताहा. तो जैसे जेमिनल है ना, तो जेम डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलो अल्केन, जेम डाई हैलो, इस तरह से वर्ड्स आएंगे. ठीक है ना. रिटन द कंप्लीट थिंग जेमिनल, बट वो शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकते हैं. आमना, नहीं तो आमना तो नहीं. मरियम बतूल, वेटिंग फॉर यू. हो जाएगा ना, इसमें सवाल कराने की तो जरूरत नहीं है किसी को. Just give me a second. Let me know once you're done, guys. Okay, sir, everyone is done. This सामना is not done. ठीक है. चलिए, ठीक है, थोड़े सवाल कर ही लीजिए आप लोग. सवाल, सवाल लिखिए. क्लासिफाई द फॉलोइंग एंड on the basis of, on the basis of, on the basis of number of halogen
atom. Number of halogen atoms. 1. See, the halogen atom should not be, it's not necessary that they are going to be same, तभी आप di और tri बोलिएगा, ठीक है? You can call them dihalide, monohalide. Waiting for Amna. मरियम लोहानी के लिए क्यों? सुफियान अंताहा just waiting for you. हो गया होगा लेकिन ना, चलिए ठीक है, होपफुली हो गया होगा, ठीक है. दिस इज गोइंग टू मोनो हेलो alkene, हेलो अरीन, going to be tri halo alkene, it's going to be di halo alkene, है ना, alkene है, it's going to be tri halo alkene, it's going to be di halo arene. ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, इट्स फाइन, इट्स फाइन. ओके, ऑप्शन दी आंसर इट्स फाइन. कोई डाउट तो बताइए, देखने की होपफुली जरूरत नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. इज एवरीथिंग क्लियर? यस और नो? मरियम बतूल, सुफियान एंड ताहा. Yes, sir. Yes, हम्म, sir. या ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? चलिए, नाउ प्लीज राइट नेक्स्ट. Now we are going to classify monohaloalkanes. We are going to classify monohaloalkanes on different categories. So please write. एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद लिखना चालू कीजिएगा, ठीक है? डोंट राइट नाउ. So monohaloalkanes, these are classified into two categories on the basis of, first of all, bonding of halogen atom with the type of carbon atom or the hybridization of carbon atom. This is on the basis of hybridization. So if the halogen atom, it is attached to a carbon which is sp3 carbon atom, ठीक है? And whether the halogen atom which is attached to carbon atom, then whether this carbon atom is sp2, this carbon is sp2 या it is sp3, उसकी basis पे क्या है, उसकी basis पे classification.
Now, if it is attached with a carbon atom which is sp3, तो इसको तो एक तो क्या बोला जाता है, alkyl है. So it is called as alkyl halide. ठीक है. अब alkyl halide में there are 3 categories, ये आप जानते होंगे. एक है 1 degree प्राइमरी, एक है 2 degree that is secondary, और एक है 3 degree that is tertiary. I hope there is no need of further explanation on this, because 1 degree का मतलब the carbon atom it is attached with one more carbon. Secondary, the carbon atom on which halogen is present, it is attached to 2 more. Tertiary के लिए ऊपर भी हमने लिखा दिया है. The next 2 are going to be very important. ठीक है. The second classification that we have, it is known as allylic. Very important. ठीक है. This is very important. Allylic, allyl और allyl halide. ठीक है. और allylic haloalkane और allyl haloalkane. In this what happens, please see. एक लिखना भी है, उसको दोनों तरफ से बनाएंगे हम लोग. हाइड्रोजन एटम connected to sp3 तो होगा, because it is under the category of sp3 carbon. Halogen atom connected to sp3 carbon. sp3 carbon से वो connected है. Which is further connected to sp2 carbon. And how can sp2 carbon exist? It will be only existing in the form of C double bond C. For example, you'll understand with example very easily. See here, we have, so the condition should be like this: sp2 carbon atom which is connected to sp3, and this sp3 carbon is having the halogen atom, for example halogen carbon, and this carbon should have a double bond. This type of fragment should be present. Whether it is present in the form of a let us suppose double bond, so this carbon is sp2, this carbon is sp3. Now here you are having halogen, for example Br, or it can be something like this also. Double bond, so this carbon sp2, then single bond, then here you are going to have Cl, for example. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. You can see that this is halogen atom, this is sp3, and this is sp2. sp3 connected to sp2 connected to sp3, which is further connected to halogen atom. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. जल्दी बताइए. ये सामना, मरियम, सुफियान, ताहा. Tell me. Make sense? Yes or no? Yes, sir. याद रहेगा? ठीक है, इसको याद रखना है. It's very important. Similarly, one more important term is benzylic. ये important भी है, confusing भी है. Fine, but you have to memorize this. There are certain things in chemistry, if you memorize, life becomes very easy. Otherwise आपको हवा नहीं लगेगी. कुछ चीजों को मन मार के बिल्कुल बेतुकी लगेगी आपको. Benzylic. Manimatul, can you please turn your mic on? Yes, sir. Do you know what is sp3? Sir, not properly, but a little bit. ठीक है, सुनिए जान जाओ पड़ेगा. है ना, कार्बन के पास 0 डबल बॉन्ड, 0 मल्टीपल बॉन्ड, इसको कहा जाता है sp3 कार्बन. व्हेन कार्बन हैज 1 डबल बॉन्ड, इसको कहा जाता है sp2. व्हेन कार्बन हैज 2 डबल बॉन्ड, we call it sp. When carbon has 1 triple bond, we call it sp. आप लोग साइड में कहीं छाप लीजिए. If there is no double bond, no triple bond, sp3. If there is 1 double bond, sp2. If there is 2 double bond, sp. If there is 1 triple bond, sp. कॉपी कर लीजिए इसको. हाँ सर, समझ में आ गया. आ गया? जी सर. ऐसी कुछ चीजें आए ना तो प्लीज पूछ लिया कीजिए. ठीक है. दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलोएल्केन और बेंजाइलिक हैलोएल्केन. कई सारे नाम आ सकते हैं. बेंजाइल पे आपको फोकस करना है. एक कुछ आगे दिक्कत नहीं आती. बेंजाइलिक हैलाइड, what is going to happen here? We see the halogen atom connected to, बताओ connected to, बोलो. अरे बोलो भाई, connected to. Halogen atom should be connected to what? Tell me. Halogen atom should be connected to what? बोलो. कुछ तो दिमाग लगाओ. सुफियान, ताहा, आमना, मरियम,
halogen atom, benzylic halide. That means halogen atom should be connected to, bolo, Benzene ring. boliye. No, not benzene ring. We are studying the category in which halogen atom is connected to always what? sp3 carbon. We are studying when benzene ring is connected to sp3 carbon. So it will be always connected to sp3 carbon. Only sp3 carbon. No halogen atom is going to be connected to sp3 in alkyl, in allyl, in benzyl. In all of these three categories, halogen atom will always be connected to sp3 carbon atom, which is further connected to benzene ring, which is further. रट लीजिएगा इसको। सी ये दिमाग में आएगा, अभी एक बार आया ना, बार बार ये आएगा। whenever you see benzene ring connected to halogen, रटना है इसको। there is no other option. Further connected to is further connected to benzene ring. Benzene ring. Make sense? Taha and Sufyan, समझने की तो बात है ही नहीं। याद रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये बताइए। Benzene ring and halogen. बेंजीन रिंग हाइड्रोजन हमने गलत बता दी। देखो संगत का असर आप लोगों के साथ रहते रहते हम भी गलत बना दिए। संगत का असर यहाँ पे आता है। हाइड्रोजन एटम, this carbon is only having single bonds sp3 which is further connected to benzene ring. ठीक है? Can I have further more example like this? This is also benzylic. अगर नहीं लिखा है तो घबराइए मत, लिखने का टाइम मिल जाएगा आपको, ध्यान से होगा। In these two cases, it is always going to be connected to what? sp2 carbon atom, है ना? sp2 में हमेशा होगा। दो कैटेगरी है इसमें, विनाइलिक आसान है होगा नाम, लेकिन याद रखना थोड़ा सा जरूरी है आप लोग के लिए। विनाइलिक हलाइड और विनाइल हलाइड। In this कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे डायरेक्टली। Sorry guys, I got disconnected. I don't know when. Can you see my screen? Yes, sir. You heard this vinylic halide? Yes or no? जल्दी Yes, sir. बताइए। ठीक। We have aryl halide or arylic halide. Aryl halide is haloarine. Aryl halide. So in this, the halogen atom will be connected to benzene ring. ठीक है? X atom, halogen atom connected to copy this down. Raise your hand once you're done. बाय द वे हम और एग्जांपल्स यहाँ पे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक और हो गया इस तरह से, एक और नहीं, सिमिलरली here you have CS3, here you have fluorine. So this is also an example of aryl halide. Raise your hand once you're done. अच्छा, by the way, आप once you raised hand, please be seated. हम बस आ रहे 2-3 मिनट। Be here only. I'm coming in 1-2-3 minutes.
Just waiting for Mariam Batul. ठीक, ये तो बातें हो गई ऐसी बातें, है ना। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको आज हम एक होमवर्क देंगे, है ना। उस होमवर्क में आपको क्या करना है, दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ, ठीक है। ये है, हियर यू डोंट हैव टू नेम देम, नेम नहीं करना है आप, राइट। व्हाट यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू, ये नहीं, नेम द फॉलोइंग, नहीं, ये नहीं करना है आपको, नेमिंग नहीं करनी है। क्लासिफाई देम एज अल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइल और अराइल, बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक द स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर बनाए होगा नहीं, है ना। एंड यू कैन सी इट इज, इट्स वेरी क्लमजी, है ना, यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ इट, यू मस्ट नॉट बी नोइंग हाउ टू ड्रॉ इट। So please tell me one or two questions that I can uh, make you understand how to draw them and all of those things. चूज कीजिए जरा, एक एक चूज कर लीजिए, आप लोग 3 लोग हैं ना शायद यहाँ पे। चलिए प्लीज सेंड इन द चैट विच स्ट्रक्चर शुड आई ड्रॉ, और एक हम अपना खुद से चूज करके देखते हैं। चलिए, आई विल, देयर आर 12 क्वेश्चंस हियर, वी आर गोइंग टू डू 4 टुडे, है ना। एंड बाकी 8 जो दैट विल बी फॉर यू, है ना, एज होमवर्क, बट प्लीज डू इट। सवाल मतलब एनसीईआरटी में सवाल इसी तरह से रहते हैं, तो यू हैव टू डू एनसीईआरटी एंड शुड बी, यू शुड बी कंफर्टेबल इन दिस ना। प्रॉब्लम आपकी रिएक्शन होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सर हमको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, ठीक है। सो दीज आर स्मॉल प्रॉब्लम, जितनी जल्दी आप खत्म करिए उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है, बिकॉज बिग प्रॉब्लम्स आर कमिंग, फाइन, reactions, reagents, all of those problems are coming, so you have to focus on that, है ना। Today what you will do is spend all the time in these things, small problems. Tell me, अरे जल्दी भेजो चैट में, कौन कौन सा सवाल करते हैं आपके लिए, एक एक भेजो। मरियम, आमना, सुफियान, ताहा, आमना तो है नहीं लेकिन फिर भी, ओके, ओके ताहा, ओके। ए ताहा, एक ही भेजना भाई, 10 क्यों भेज रहे हैं आप ताहा। अच्छा, यू चेंज इट, ओके फाइन। वेटिंग फॉर मरियम बतूल एंड सुफियान। अरे चूज करने नहीं आ रहा क्या, अकड़ बकड़ में वो कर लो, जल्दी बताओ लेकिन। 10 या 9 में से कोई एक मरियम बतूल, ठीक है। 10 ऑफ मतलब ताहा ने चूज किया है, तो वी विल बी डूइंग 9 फॉर यू। 10 और 9 हो चुका है। सुफियान, अरे सुफियान भाई जल्दी बताओ, जब तक हम करते हैं ये 10 और 9। सुफियान, 10 तो ऑलरेडी हो चुका है ना सुफियान, so choose something else। 10 and 9 are already chosen, तो 10 और 9 तो हम करेंगे ही करेंगे, choose something else। let's first of all look at ninth one, ठीक है, तो देखते हैं, देखिए, ठीक है। so सबसे पहले 5, ठीक है, 9 करना है हमको, 10 करना है हमको, एंड 5 करना है हमको, ठीक है, फाइन। सी इट, without without the branches, without the brackets, tell me how many carbon atoms are there here। यहाँ पे बताइए कितने कार्बन आटम है विदाउट दी ब्रांचेस। How many carbon atoms in the ninth one without the branches? Brackets. Without the brackets, how many carbon atoms? Yes, Mariam. 4. 4 carbon. तो 4 को आप ऐसे बनाइएगा, 1 2 3 4। Can you see 4 carbon atoms? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक है। Now this is CH3, ठीक है, this is CH, उसका डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे CH है, फाइन। 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 एंड 4, हाँ, ये 4 कार्बन एटम है। इस 4 कार्बन में Br लगा हुआ है, देयर आर ब्रांचेस है ना, जो भी ब्रैकेट्स है दैट इज ब्रांच। ब्रैकेट क्या है, ब्रांच। एक आपके पास Br लगा हुआ है और 2 CH3 लगे हुए हैं, एक Br लगा हुआ है
2 CH3 लगेगा, so this will be the structure. ठीक है, अब दूसरा करते हैं 10 धीरे धीरे, 10 से पहले 5 कर लेते हैं, बिकॉज 5 1 is 5th one is similar to what we have done this time ना. तो सबसे पहले how many carbon atoms, tell me guys, without the brackets how many carbon atoms, without the brackets? 4. 4. तो फिर वही करेंगे 1 2 3 4, है ना. उसके बाद 1 2 सेकंड में CH3 लगा हुआ है, तो 1 2 सेकंड में CH3 लगा हुआ है. ठीक है, देन CH, देन आफ्टर दैट 1 2 3 3 में Br लगा हुआ है. ठीक है, मेक सेंस. सुफियान, ताहा, मरियम, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक है, आप देखिए उसके बाद है 10th वन. तो 10th वन में एक वर्ड है पी. ठीक है, दैट इज पैरा. फाइन, दैट इज पैरा. नाउ यू हैव C6H4. तो अब हम कुछ चीजें आपको बता देते. C6H6, C6H5, C6H4. ठीक है, तो C6H4 तक ही मतलब काफी है. C6H5 तो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा हुआ है, दैट इज बेंजीन रिंग, है ना. C6H6 क्या होता है? दिस इज बेंजीन. C6H5, whenever you see C6H5, it will be C6H5 में बेंजीन रिंग, इसमें एक कुछ लगा रहेगा. Something here will be attached. C6H4 में there are 3 cases, ऑर्थो, पैरा और मेटा वाला, है ना. तो अगर ऑर्थो है तो यहाँ पे एडजेसेंट में कुछ लगा रहेगा. अगर वो मेटा है देन इट विल बी यहाँ पे कुछ लगा, यहाँ पे कुछ लगा. इफ इट इज मेटा देन इट विल बी लीविंग वन कार्बन एटम. एक कार्बन में लगा है, फिर एक कार्बन छोड़िए, यहाँ लगा हो चाहे यहाँ लगा हो, ऐसे लगा होगा. पैरा मीन्स अब 2 कार्बन छोड़ के कुछ लगा हो. दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा. पैरा में व्हाट विल हैपन? 2 कार्बन छोड़ के. ठीक है, तो एक कार्बन, हियर समथिंग इज एडेड, लीव 2 कार्बन, लीव दिस कार्बन एंड हियर समथिंग विल बी देयर, दैट इज पैरा. बट इफ देयर इज ऑर्थो, इफ देयर इज एनी वर्ड ऑर्थो, देन यहाँ पे ऐसा होगा. This is what? This is meta or M will be used. This is para, that for which P will be used. In this case, we have para case. तो जो 10th वाला एग्जाम्पल होगा इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 10th. C6H4 will be something like this. ठीक है, now see, this is also para. Can you see that? बताइए. Here we have attached something. After 2 carbon atoms, we have attached something. Make sense? Yes or no? Please tell me. बोलो. So, Yes. Yes, ठीक है, sir. you should be aware of all of these things. You should be, है ना, you should be comfortable with this. So this is para. So in para, what do we have? Chlorine we have. And here what do we have? Here we have CH2CH. CH2CH and this CH has 2 CH3. CH3 को ना शॉर्ट में आप Me लिख सकते हैं, that is methyl. So this will be the structure for the 10th one. सबको समझ में आया? हाँ या ना बोलो. You can do the rest of them now, and you have to classify also. So classify भी कर देते हैं, चलिए. So it is going to be what? This one. This is attached to